आज मैं बना रही छू नागपुरी अंडा करी। मैं नागपुरी किती जणांनी ई इंडार खोडी खाधी ती आणि ई इंडार खोडी खायनं भन्नाट टाच लागच। आज वर सरकोच बना रही छू। मग आता मैं एक डळी नसळलेली ती आणि कुंडे में बारीक वाटली ती। मग 4 इंडा वकाळी ती। अब येणं आपण बारीक बारीक आलू न्या टकडा करलेरचं। आपण काय करायचं, आपण इंडार खोडी करायचं ना, एक इंडार दी भाग करलाचा, पण ही बारीक जे टकडा करायचा आणि वर इंडार खोडी खायन खूप आस लागच आणि एर ग्रेव्ही सुद्धा खूप आस बनच। आता मग कचोळी में से सुको मसालो काढ रही छू। तर 1 चमचा खोडी लीधी, 1 चमचा काळो मसालो, आधो चमचा हळद, 1 चमचा भुगडारो कूट, आधो चमचा काजूरो कूट, चवेनुसार नूण नाखन मेल दीनी। अब आपण एना नसळे मंगारे सारू गॅस पर कढाई मेल दीनी, कढाई में तेल नाख दीनी आणि तेल तपगुजर बाद नसळ नाख दीनी। नसळ आपण आता लाल भुंजा की जे नंतर शे सुको मसालो मग तेले में परतन लेल दी। येर मसालो आपण तेले में परतन लेरचं। ओरे नंतर मसालो तेले में परतन लेल दी जेर बाद आपण जे इंडा टकडा की देते वो टकडा नाखन तणे आपण आता 1 ते 2 मिनिट तेले में जे इंडा ना शिजाळेरचं। તમે દેખ શકો છો એ આપણે ઈંડાર ખોડી કલર સદા કતરા આચવાય છે। એમાં પાણી અજીબાત પૂરી નાખીશું। જર તમે પાણી નાખણ રસાવાળ જર બનાવી હોય તો તમે પાણી સદા નાખ શકો છો। માં आता સુક જ નાગપુરી અંડા કરી બનાવી છું। એ અંડા કરી કસ વાટી કમેન્ટ કરન નક્કી કો, લાઈક